Yeah. Sir, it is issued by a court to any person, public or private individual. In the case he has detained the body of another individual to be presented before the court. Wonderful, wonderful, very good. Now someone else will tell me what is the writ of certiorari. The writ of certiorari. Anyone? नूरदीप आप ही बताएं certiorari. Sir, it is again issued by a court to the inferior court in case of transferring any case that it is undergoing, or to quash the case that is ongoing. Fine. Fine. So yesterday we studied about various fundamental rights. Okay? And there is a very important fundamental right, right to property. Right to property. That was a fundamental right, but lately it was, taken out of that through the First Amendment Act, 1951. First Amendment Act, 1951. And it no longer remained a fundamental right, but remained a constitutional and legal right. ठीक है? अभी किस आर्टिकल के अंडर आता है राइट टू प्रॉपर्टी? आर्टिकल 300 अल्फा, पार्ट 12 of the Constitution. ठीक है? Under Article 300 alpha, part 12 of the Constitution. Others have not joined yet. Okay. Anyways, so there are certain exceptions to fundamental rights. तो ये आप पढ़ लीजिए कि ये अभी legal right है, constitutional right है. अभी ये fundamental right नहीं है. Right to property is not a fundamental right. Next, we have a certain exceptions. Certain exceptions to the fundamental rights. Certain exceptions to fundamental rights. See, whatever I'm teaching here, it will not just be sufficient for IB, but also for UPSC prelims. If you are writing civil services examination, this will be very, very relevant for that also, because I'm taking things in a little more depth than is required for this exam. So try to take full advantage of that. ठीक है? इसमें first है exceptions, Article 31 alpha. ठीक है? तो ये 5 categories of laws को protect करता है from being challenged and invalidated. तो लिखे इसमें, it prevents or it protects five categories of laws from being challenged or invalidated on the ground of on contravention of Article 14. ठीक है? तो ये 5 कैटेगरीज के कुछ लॉज हैं जिनको ये प्रोटेक्ट करता है कि अगर वो लॉज को हम उस ग्राउंड पे आप इनवैलिडेट नहीं कर सकते कि उन्होंने फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 को वो वायलेट किया है. तो इसमें फर्स्ट क्या है? ठीक है, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स. एक्विजिशन of estates and related rights by the state.
ठीक है, नेक्स्ट, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट of properties by the state. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अमेलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस, अगर एक से ज्यादा कॉर्पोरेशन को अमेलगमेट किया, अमेलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस, ठीक है, देन एक्सटिंग्विशमेंट मतलब खत्म करना, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और शेयर होल्डर्स ऑफ कॉर्पोरेशंस, ठीक है, डायरेक्टर्स के और शेयर होल्डर्स के राइट्स को वैनिश कर देना, ये भी आप चैलेंज नहीं कर सकते अंडर दिस, ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ माइनिंग लीजेस, ठीक है, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, अमलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस, extinguishment of rights, ठीक है, taking over of the management of properties by the state, amalgamation of corporations, extinguishment of rights and extinguishment of mining leases. एक और चीज इसमें लिख लो, आर्टिकल 31 अल्फा, आर्टिकल 31 अल्फा reserved for the president's assent unless it has been reserved for the president's assent, ठीक है, ये पॉइंट समझ आया कि जो स्टेट लॉज है ना, स्टेट लॉज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के, तो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है जब तक वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व्ड है एंड हैव रिसीव्ड हिज असेंट एंड हैव रिसीव्ड हिज असेंट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा ध्यान से याद कर लीजिए। तो इसमें हमने क्या पढ़ा आर्टिकल 31 अल्फा में, ठीक है, आर्टिकल 31 अल्फा protects 5 categories of laws from being challenged or invalidated on contravention of Article 14. उसमें कौन कौन से हैं? Acquisition of states, we have taking over management of properties by the state, management of properties by the states, okay, so all these things. Next आ जाओ, next आपका number 2 is Article 31 Bravo. Article 31 Bravo, ठीक है, इसमें क्या है? It saves acts and regulations. It saves acts and regulations placed under ninth schedule आपको याद होगा, लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी एबोलिशन, प्लेस्ड अंडर 9th schedule फ्रॉम बीइंग challenged
or invalidated on the ground of violation of any of the fundamental rights. Any of the fundamental rights. ठीक है, अब हमने जो आर्टिकल 31 अल्फा देखा, ठीक है, इसका स्कोप 31 अल्फा से ज्यादा है. सो स्कोप ऑफ आर्टिकल 31 ब्रावो is wider than the article 31 अल्फा. ठीक है, क्लियर है यहां तक? एनी डाउट्स? Sir, हाँ जी, बोलिए. sir, with respect to right to property, could you please explain constitutional and the legal right, what these are exactly? See, the thing is, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल. हमने पढ़ा था कल कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स. कि अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो अंडर विच आर्टिकल हमने कल पढ़ा है, आर्टिकल 32, राइट टू 32. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है, बट राइट टू प्रॉपर्टी 1951 से पहले इट वाज अ फंडामेंटल राइट कि अगर स्टेट आपकी प्रॉपर्टी लेती है तो स्टेट को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो. ठीक है, पर क्या हुआ, 51 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ने उसको हटा दिया. बिकॉज जमींदारी, आपको पता है, इंडिपेंडेंस से पहले जमींदार के पास बहुत ज्यादा एस्टेट्स होती हैं, है ना, बहुत ज्यादा एस्टेट्स होती हैं. तो उन्होंने क्या किया कि वो एस्टेट्स को एक्वायर करना है, लैंड रिफॉर्म्स करने हैं. इक्वली यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट these kind of properties amongst the people. तो उसके लिए they brought it under, they took it from the fundamental rights ताकि वो justiciable ना हो पाए, so that we can kind of take away the एक ceiling limit decide कर देगी. For example 10 hectares, 20 hectares. अगर इससे ज्यादा किसी जमींदार, जो erstwhile जमींदार थे, तालुकदार थे, उनके लैंड को एक्वायर करके रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था. तो वो अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो आप नॉर्मल प्रोसीजर ला सकते हो, लेकिन आप एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन नॉट क्लेम कि हाँ मेरा ये राइट वायलेट हुआ है और अब मेरे को या मेरा लैंड वापस दिया जाए. तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में ये डिफरेंस है. इसमें दो एक्सेप्शंस हैं, जो जब स्टेट अपनी राइट टू स्टेट प्रॉपर्टी एक्वायर करती है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंडिविजुअल की या बॉडी की, उसमें दो दो उसमें क्लॉजेस हैं. पहला है, चलो आप लिखिए लो, मैं लिखवा ही देता हूँ आपको. उसमें दो क्लॉजेस हैं, वो लिखिए आप. फर्स्ट वन, exceptions to the right to property ठीक है. इसमें क्या है, स्टेट जनरली स्टेट इज नॉट required to compensate. ठीक है, it is not required to compensate. It is not required to compensate except number one, when the land acquired is within the mandatory ceiling limits with respect to agricultural land. ठीक है, किसी बंदे की एग्रीकल्चरल लैंड है और वो विद इन सीलिंग लिमिट है, तो अगर स्टेट उसको एक्वायर करती है उस लैंड को, तो स्टेट को कंपल्सरीली वो एक्वायर करना पड़ेगा. ठीक है,
वो compensate करना पड़ेगा, so it has to compensate. Second, when state acquires the property of a minority educational institution, तो इन दो केसेस में स्टेट को कंपनसेशन देनी पड़ती है. इन दोनों केसेस के अलावा बाकी केसेस में स्टेट इज नॉट ऑथराइज्ड. क्लियर है? क्लियर अभी आपको नूरदीप? Yes, sir. So basically, constitutional legal rights, these can be only given for the scrutiny purposes, and fundamental rights can be justiciable. Like for that, we can go to the court. For the constitutional and legal, we cannot. We can through the normal procedure. उसमें is not a matter of right. Okay, It is got not it. a matter of right. For example, आप claim नहीं कर सकते कि मेरा ये right violate हो गया, अब मुझे आप दो ही दो वापस. वैसा नहीं होगा. इसमें you can go to the court. For example, किसी को death sentence भी मिल जाता है, तो वो plead तो कर सकता है ना higher court में. तो like that, इस तरह से इसमें. Okay, ठीक है? sir. Thank you. हाँ, तो ये जो हमने पढ़ा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी हमने 9th शेड्यूल में पढ़ा था कि जो भी हम लॉज और रेगुलेशंस 9th शेड्यूल में लाते हैं वो इम्यून हो जाते हैं जुडिशियल रिव्यू में. ठीक है, लेकिन 1973 केशवानंद भारती केस हमने पढ़ा था ना, वाया द केशव नंदा भारती केस. the supreme court held that only those acts and regulations enacted before 24th April 1973 are immune from judicial review. ठीक है, तो इससे पहले क्या होता था कि जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कोई भी जो ऐसा एक्ट पास करना होता था जो उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाना होता था ताकि वो उसकी रिव्यू ना हो, उसका जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो, तो वो उसको 9th शेड्यूल में डाल देता था. ठीक है, ओनली दोज इनैक्टेड बिफोर दिस. ये वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू 9th शेड्यूल. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 9th शेड्यूल, बट नॉट आफ्टर दैट. only those enacted before and not after that. जो 24 अप्रैल 1973 के बाद जो एक्ट्स और रेगुलेशंस आप 9th शेड्यूल में डालोगे उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू is a part of the basic structure of the constitution. Judicial review is a part of the basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज है जिसको वायलेट नहीं कर सकते. और केशवानंदा भारती केस ने अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किसने दिया, तो केशवानंदा भारती केस में वी हैड द जेनेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 31C, 3140. आर्टिकल 3140 ये क्या है? ठीक है, किसने इंसर्ट किया था? ये इंसर्टेड बाय आर्टिकल 25th अमेंडमेंट एक्ट, बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971. ओके, तो इसमें क्या है? इसका फर्स्ट पॉइंट लिखें. नो लॉ that seeks
to implement, no law that seeks to implement the socialistic directive principles under Article 39 Bravo and Charlie. ठीक है? Socialistic directive principles shall be void on the ground of contravention of Article 14 or Article 19. ठीक है? So very important point. समझ आया ये क्या आप कहना चाह रहा है? इसमें कह रहा है कि कोई भी लॉ जो सोशलिस्टिक, नो लॉ दैट सीक्स टू इम्प्लीमेंट सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर आर्टिकल दिस एंड दिस shall be void on the ground of contravention of Article 14 and 19. ठीक है? इसमें आगे लिखो, केशव नंदा भारती केस, the Keshav Nanda Bharti case (1973). ठीक है? इसने क्या किया? It declared that the scope of Article 39 Bravo and Charlie is wider. ठीक है? And whenever Article 39 Bravo and Charlie comes in, Article 14 goes away. तो अगर सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने इंप्लीमेंट करना है तो उसमें दिस इज नॉट अ चेक. ठीक है? तो ये आपके हो गए जो फ्यू एक्सेप्शंस थे फंडामेंटल राइट्स के. अब एक तो हमारे पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स जो हमने पढ़ लिए 12 से 12 to 35. So there are certain rights outside part 3. Rights, they will not be fundamental rights, they are rights outside part 3 of the Constitution. कौन कौन से हैं? फर्स्ट लिखो, नो टैक्स shall be levied or collected except by authority of law. No tax shall be levied or collected except by authority of law. Article 265 in part 12. Rights outside part 3. Next, no person, ये जो हमने राइट टू प्रॉपर्टी की बात की, no person shall be deprived of his property except by authority of law. तो हमने क्या पढ़ा अभी इसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है किसी का, तो ऐसा नहीं सरकार आके उसको खत्म कर देगी, लीगल होगा तभी. तो लीगल एक्शन इज स्टिल सेफगार्डेड, सो दैट्स व्हाई लीगल, इट्स अ लीगल राइट एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. ठीक है? ये कौन सा आर्टिकल है?
आर्टिकल 300 अल्फा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें थर्ड आ गया आपका ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स throughout the territory of India, throughout the territory of India shall be free. पूरी इंडिया में आपको मूवमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, आपको ट्रेड इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये आपका आर्टिकल 301 अगेन इन पार्ट 12 पार्ट 13 पार्ट 13, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इलेक्शंस टू लोकसभा, इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, state assemblies shall be held as per what? Universal adult suffrage, universal adult franchise आपकी on as per adult suffrage. This article is 326 in part 15 of the constitution. तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। अभी फंडामेंटल राइट्स में कोई डाउट है आपको तो पूछे, फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्लियर सर। और किसी को कोई डाउट? अभी मेरे को ये बताएं आर्टिकल आर्टिकल 21 क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 21? आर्टिकल प्रोटेक्शन 21। ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या क्या आता है? Right to privacy and also right to elementary education. फिर आर्टिकल 21 अल्फा में क्या आता है? Yeah, 21 alpha has the right to elementary education. What is the age group? 6 to 14. Okay, and what is that? What is it with respect to directive principles में? What is the age group for education? मैंने कल बताया था. 0 to 6. Yes, and in fundamental duties? 6 to 14. Wonderful. Okay, so now we start with the directive principles of state policy. Okay, so articles 36 to 51 in part 4 of the Constitution, part 4 of the Constitution provide for directive principles of state policy. हमने कहां से लिए ये? हमने पढ़ चुके हैं पहले. Adopted from Irish Constitution. Adopted from the Irish Constitution. उन आयरलैंड ने कहां से लिया था? Spanish. The Irish took it from Spanish Constitution, and we took it from the Irish. Okay. Next, Dr. Ambedkar, he was the chairman of the drafting committee. He termed them as the novel features of the Constitution. ठीक है. And Granville Austin,
He termed these as the conscience of the constitution. Okay. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड, वो हम लिख लेंगे. फर्स्ट लिख लीजिए, दे रिजेंबल the instrument of instructions of the Government of India Act 1935. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर. नेक्स्ट पॉइंट. So they actually see fundamental rights हमारे justiciable से, but they the DPSPs are not justiciable. We cannot move court. They are not justiciable. They are the ideals. They are the ideals that the state should keep in mind. They are the ideals that the state should keep in mind. Or framing policies. एक जो ये वाली स्टेटमेंट अभी बताऊंगा, दिस इज गोइंग टू बी fundamental. This statement is going to be fundamental in the governance of the country. So DPSP's directive principles of state policy are fundamental. This statement ये याद रखनी है, डायरेक्टली पूछ लेगा कि DPSP's के बारे में 3-4 स्टेटमेंट देगा, तो this one is important. They are fundamental in the governance of the country. ठीक है. हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था. व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दे एस्टैब्लिश? Political. Yes. DPSPs, they establish socio-economic democracy. Socio-economic democracy. इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपके हमने पढ़ा भी था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. Liberté, égalité and fraternité, the origins from the French Revolution, the fall of the Bastille. Fraternity. ठीक है. These are the 3 bedrocks. ठीक है. अभी हमने जो DPSPs हैं, वैसे तो उनकी कैटेगराइजेशन नहीं है कोई भी. They don't have any categorization, but for the convenience of understanding, they have been divided into 3 subcategories. First is Gandhian DPSPs, which kind of follow the Gandhi's idea of Sarvodaya, social welfare. Then we have liberal intellectual principles. Gandhian liberal intellectual, and then we have socialistic principles. ठीक है. First we will take up socialistic principles. Socialistic principles. ठीक है. इसमें फर्स्ट लिखिए, आर्टिकल 38 में क्या है? आर्टिकल 38, welfare of people and
minimize inequalities and minimize inequalities. किस तरह की inequalities? Inequalities of income, inequalities of opportunity. ठीक है, इस तरह की जो भी inequalities हैं सोसाइटी में persistent, उनको minimize करना. Next, Article 39. इसमें क्या है? इसमें लिखिए right to adequate livelihood. Right to adequate livelihood. ठीक है, equal distribution of resources. ओके, जो रिसोर्सेज हैं वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कहीं पे वो डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए, ताकि सबको एक्चुअली आइडिया क्या है इस चीज का कि for the development of human personality we need the conditions that are conducive to such development. So for that we cannot have different starting points for all of us and then tell them to compete. So we have to create an enabling ecosystem. We have to create an ecosystem where all of the citizens of this country have equal opportunity for their own welfare and in return the welfare of the entire society and the country. Okay? Then third is prevention of concentration of wealth. ये यूपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. ठीक है, कि वेल्थ को कंसंट्रेट नहीं होना. अभी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, ऑक्सफैम रिपोर्ट, इट मेंशन्ड दैट 1% of Indians they hold 48.7% of its total wealth. So that is the concentration of wealth is happening here. We have to counter this mechanism. That is the idea behind the directive principle that we just mentioned. Next is equal pay for equal work for both men and women. So what does this mean? Pay parity, है ना? For the same work that is being done, women are being paid less. So that idea was initially coined by our constitution forefathers, the makers of the constitution, that we should have parity in the pay structure for both men and women. Then you have preservation of health and strength of workers. ठीक है, health and strength of workers and children. Clear है यहाँ तक? Then we have conditions for healthy development of children. ये आपको याद ही करना है, इसका रट्टा मारना है आपको. हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये सारे आपके सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो हम पढ़ रहे हैं. तो ये जो हमने पढ़ा, ये आर्टिकल 39 के अंडर आ रहे हैं. आर्टिकल 38 में वेलफेयर ऑफ पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, आर्टिकल 39 में ये सब हमने पढ़ लिया. अभी नेक्स्ट आ जाओ, आर्टिकल 39 का एक और पार्ट है, आर्टिकल 39 अल्फा, जो बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था. आर्टिकल 39 अल्फा, ये क्या है? ठीक है, equal justice to promote equal justice and free legal aid to poor. To promote equal justice and free legal aid to the poor. Then Article 41,
अब 41 क्यों आ गया? बिकॉज हम सिर्फ सोशलिस्टिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक आर्टिकल के भी 3-4 प्रोविजंस होंगे। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39 आपका गांधीयन में भी आ जाएगा, आर्टिकल 40 आपका गांधीयन में आ जाएगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल में भी आ जाएगा, तो ये ओवरलैप होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 41, सिक्योर राइट टू वर्क, टू सिक्योर राइट टू वर्क and assistance in case of unemployment, and assistance in case of unemployment and provision of education, right to education, provision of education. देन आपका आर्टिकल 42 क्या है? क्रिएट कंडीशंस, टू क्रिएट कंडीशंस फॉर द जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, मतलब जो वर्किंग कंडीशंस ऑफ लेबरर्स हैं वो इंप्रूव करनी है। इसके लिए डिफरेंट लेबर लॉज, अभी रिसेंटली 29 लेबर लॉज को कंपाइल करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए थे। ठीक है, सो टू क्रिएट कंडीशंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। ठीक है, देन आर्टिकल 43, क्या आर्टिकल 43? टू सिक्योर अ लिविंग वेज, to secure a living wage and a decent standard of living for all the workers, decent standard of living for the workers. आप समझ पा रहे हो इस चीज का कॉन्टेक्स्ट? ये जो हम पढ़ रहे हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, है ना, कि सोशल वेलफेयर कैसे क्रिएट करना है, सोसाइटी में इक्वालिटी क्रिएट करनी है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये हमने ये प्रिंसिपल्स यहाँ इंक्लूड किए हैं। ठीक है, देन आर्टिकल 43 अल्फा, ये क्या कहता है? टू टेक स्टेप्स, टू टेक स्टेप्स, to take steps for securing the participation of workers in the management of industries। ठीक है, कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर क्लास को भी इंडस्ट्रियल डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाओ। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ काम ही कराओ, आप उनके कंसर्न सुनो, आप what are their issues, what are their problems, so that they also feel being part of the system, their grievances, their voice is being heard। so जो उनके particular grievances हैं वो that they come up in the managerial discussion making process। so that was the idea। then article 47, what it says? to raise the level of nutrition, to raise the level of nutrition। ठीक है, level of nutrition and standard of living and public health। ठीक है, these all were socialistic directive principles। now let's talk about a few of the Gandhian principles। Gandhian DPSPs। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट आ गया, Gandhi was a great champion of village panchayats। article 40, organization of village panchayats। organization of village panchayats। ठीक है, then article 43, it was related to कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है।
ठीक है, cottage industries. Then you have Article 46, that is to promote educational and economic interests of SCs and STs. Okay, this comes in Article 46. Then you have Article 47. अभी हमने Article 47 यहाँ भी देखा, ठीक है. This is a socialistic component of the Article 47 directive principle. Now we talk about its Gandhian idea. ठीक है, consumption of drinks को prohibit करना. Prohibit consumption of intoxicating drinks. Consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. तो ये सारे गांधीयन आइडियाज हैं, महात्मा गांधी आइडियोलॉजी ऑफ सर्वोदय, सोशल वेलफेयर. Next we have Article 48. What is this? To prohibit slaughter of cows. To prohibit slaughter of cows ठीक है, and other milch cattle and other cattle. ठीक है. So basically the idea was Gandhian, the philosophy of Gandhian, this thing was to establish, he was inspired by John Ruskin's book Unto This Last. Unto This Last. This you can quote in your essays. This you can quote in other areas as well. ठीक है. इसका idea क्या था? Until the last man in the queue is not taken care of, the idea of a welfarist democracy is not fulfilled. So he was always, in his idea was always to reach the last man in the queue. Along with that, he established a Tolstoy form in Natal in South Africa, okay? South Africa, which later he, took the form of Sabarmati Ashram in Gujarat. His another principle was Sarvodaya, welfare of all. Sarvodaya through Antyodaya. Sarvodaya through Antyodaya. Okay? So that was basically we're talking about. I just tried to give you a brief context. A brief context. Okay? Now let's talk about liberal intellectual principles. Liberal intellectual principles, directive principles. What are these? Number one is Article 44. तो आपने न्यूज में सुना है. What is Article 44? न्यूज में काफी पॉपुलर रहा है कुछ देर पहले. Any idea? यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब पूरे देश में एक ही पर्सनल लॉज फॉर डाइवोर्स, मैरिज, इनहेरिटेंस, उसके लिए यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44. देन यू हैव आर्टिकल 45. वो हमने पढ़ा जो अर्ली एजुकेशन का ना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, 0 to 6 years of age. Early childhood education, 0 to 6 years of age. ठीक है. Next is Article 48. Article 48. इसमें क्या है? Organize agriculture and animal husbandry. To organize agriculture
and animal husbandry on scientific lines. Okay. So this is another liberal intellectual directive principles. Then you have Article 48 alpha. Okay, ये safeguard environment, to safeguard and improve environment, to protect the environment and safeguard forest and wildlife. Safeguard forests and wildlife. Okay. Then we come up with Article 49. ये monuments की protection के लिए, it is for the protection of monuments. Protect monuments, places and objects of historical and artistic interest. Protect monuments, places, etc. of artistic oblique historical importance. Okay. Then Article 50. This is very important. What is Article 50? It is separation of judiciary from executive. अब ये क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस से पहले क्या होता था ना, जब इंडिपेंडेंस से पहले जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते थे, the district magistrate, he used to exercise magisterial powers also. He had certain judicial powers. So it was recommended in the constitution that these magisterial powers had to be taken out. They had to be taken out, and the district magistrate had only to be taking care of the administrative responsibilities. ठीक, तो ये सेपरेट कर दिया जुडिशरी को एग्जेक्टिव से. ओके. नेक्स्ट आपका आ गया आर्टिकल 51. Article 51, establishment of international peace and security. Establish international peace. Establish international peace and order. Okay. So these were the various directive principles that we try to understand कि किस principle की क्या importance है, वो हमने ये देखा. तो कोई डाउट है अभी तक इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आपको? फिर हम आगे चलेंगे. Any doubt? Sir, Please ask. General question, like Yeah. since the DPSPs, these are non-justiciable, right? And these are the ideals that the state has to follow. So can there be a scenario where the government would say that we won't follow these DPSPs, and like, can there be a scenario of that sort that we won't? It happens. It happens many a times. This is only a guiding light for the government. The government ko these principles should be kept in mind while framing policies and implementing them. But certain times it happens that, for example, let's take the example of this Uniform Civil Code. So there has been clamor from the current government to impose the Uniform Civil Code. But if we look at the diversity of India, the kind of culture, traditional richness that we have, take the example of Jharkhand. So there is this tribal community where they choose the head of the village through a very traditional practice. For example, they would blindfold a person, the youngest person in the community, blindfold him and for example, they give a stick in his hand. So, and then they march him in the village, and in front of whichever house he stops with a stick pointing towards it, he becomes the head of that village. So that is a very traditional practice. So what we need to do is we need to understand the uniqueness, the importance of their cultural richness and slowly integrate them. For example, Uniform Civil Code हम ऐसे implement करेंगे, there will be a lot of reaction. तो उस तरह से ये scenarios create होते हैं, scenarios do occur where we are not able to follow these directive principles. That is why they were kept as non-justiciable, because at that time it was considered that we don't have the finances, we don't have the requisite, mechanism to implement them.
At that time, we were a nascent embryonic democracy. We were just, taking those baby steps. So it was required that we first, strengthen our foundational structure, our agriculture, our food sufficiency, our industrial setup that need to be improved. So that is why it was thought. And even today, if we think, some of these are being implemented in one way or the other. If we take, for example, protection of historical monuments, we are doing that. Judiciary has been separated from executive. We are taking steps towards establishing international peace and order. Early childhood education, that also is there. Agriculture, we are trying to modernize it. We are aiming, we have protected areas, we have wildlife sanctuaries. So we are taking those steps. Prohibition of cows and other cattle, that is also kind of there. Village panchayats, we gave it the constitutional status. Cottage industries को भी हम promote कर रहे हैं. SC ST के interest को भी हम वो कर रहे हैं. Consumption of intoxicating drinks. अब इसका एक blanket ban कर पाना मुश्किल है. So that is why it is kept as a kind of a what do you say, a recommendation, a directive. Okay? And to secure a living wage and all these things are being done. So basically, there are divergences. We cannot completely implement them. Okay, so that was about it. Right, sir. Okay. So, in case like if we consider any scenario where the government says intentionally that we won't be following any DPSP. ऐसा नहीं होता है. They cannot say intentionally. They have to garner votes as well. So this scenario doesn't generally occur. Even if they are doing it, they will camouflage it. Okay? They will camouflage it. Okay. So that is the case. Okay? So there were, after the drafting of the constitution, there were certain new directives that were added later on. New directive principles. What is the message? Sir, I paid the money. They are not responding to me. Mr. Ravi Kiran, I think you focus on the class. You can take these matters after the class as well. पहले class पे ध्यान दीजिए आप. You will get all the credentials, don't worry. So Article 42nd Amendment Act 1976. So this was one of the most important amendments. So what it did, इसने दो तीन directive principles it added. Number one, तो Article 39 हमने बात की ना. Article 39, healthy, secure opportunities for healthy development of children. Healthy development of children. So this was added later by this amendment. Then Article 39 alpha. जो हमने क्या था 39 alpha? अभी पढ़ा just. Free legal aid, equal justice and free legal aid. That was added by this amendment. Then Article 43 alpha. ये क्या था? Participation of workers in the management of industries. ठीक है? Then Article 48 alpha. The protection of environment and wildlife. So these were added later on. ठीक है? So these were basically the directive principles. What were their requirements? ठीक है? Utility क्या थी इनकी? ये हमें guiding light. They served as a guiding light for the constitution. ठीक है? तो एक debate चलती आई है, debate of conflict between DPSPs and fundamental rights. Which one is superior? तो इसमें there were different cases of the Supreme Court. सबसे पहला जो केस था, that was चंपकम दोराई राजन. चंपकम दोराई राजन case. This was in 1951. ठीक है? तो इसमें this thing came up and it was ruled that fundamental rights could be amended. तो इसमें जो directive आया, that was said that fundamental rights could be amended. Amend किया जा सकता है. फिर उसके बाद later on
The second case that came was Golaknath case, 1967. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि you cannot abridge or take away any of the fundamental rights. You cannot abridge. You मतलब पार्लियामेंट. यू का मतलब क्या होता है इसमें? पार्लियामेंट. एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट में कह रहे हैं. पार्लियामेंट cannot abridge or take away any of the fundamental rights. ठीक है. फिर हमारी जो हिस्टोरिकल जो केस है हमारा केशवनंदा भारती केस, 1973. This one settled the debate. What it said? इसने कहा कि Parliament can amend fundamental rights, but without violating the basic structure. But without violating the basic structure. ठीक है. तो ये this case settled the debate between the fundamental rights and directive principles. और इसने कहा fundamental rights will be kind of what you say, they will override, they will be, DPSPs will be subsidiary. And finally, in 1980, Minerva Mills case was, it came up, Minerva Mills case, 1980. What it said? It said that the entire, what do you call, the constitution framework is based on the bedrock of balance between fundamental rights and DPSPs. दोनों की अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है. Both are equally important, so it has to be a balance. तो ये आपका DPSPs कंप्लीट हो गया. कल हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज और सर्टेन अदर टॉपिक्स विल टेक अप. ठीक है. तो यहां तक एनीवन हैज एनी डाउट्स? हाँ जी गाइस, किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है. I think you guys remember at 1700 hours today we have a Instagram live session with Lieutenant Colonel Narendra. So you guys may well join it and see for yourself if you wish. It will be Insta live at my Insta handle Navjot Singh_IB. So you might as well tune in at 1700 hours. I will share the link in the group as well. So see you guys tomorrow at 11. We'll Yes. start with our April current affairs tomorrow. Okay. Good day, friends. See you. Thank you, sir. Okay. Welcome.